Hello everyone, welcome to Aptplace Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So these are the two important newspapers from which both the editorial and the news would be covered. So let's get started with today's topic list. Today is 23rd of October. The first topic is India weight net zero target ahead of COP26, that is COP26. Second, rocket system BrahMos deployed along the LAC, line of actual control. Third, India-US talks focus on infrastructure and defense. Second last is countries to call China to respect Uyghur rights, right? So this is in community. And ways to political parties to achieve internal democracy. So this is an editorial that I'll be covering from the Indian Express. Apart from this, there would be some MCQ questions, and these questions would be based on current affairs to help you in the upcoming prelims examination. So those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptplace Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Starting with the first news, that is India way net zero target ahead of COP26, something which is important for your general studies paper 2, bilateral regional grouping and agreement, evolving India's and affecting India's interest. Also, this is important for your general studies paper 3 in the environment section. So COP26 is something which is very important for this year, and the aim of the COP26 is to ensure net zero target for all developing and developed countries. So what is there? Basically, it is the news more focuses upon India's commitment. So India and its commitment and efforts to climate change mitigation has said that it has not entirely ruled out the possibilities of net zero emissions target, right? जिस तरह से यूएस और यूके की तरफ से इंडिया को फोर्स किया गया है कि वो अपने नेट जीरो एमिशंस टारगेट को बताएं, बट इंडिया ने कहा है it is not like that we would be not achieving net zero, but we need a substantial time to reach this target. And India has reiterated that the demand that the developed nations make their commitment by providing an annual $100 billion to the developing countries. तो इंडिया ने कहा है कि जो खास करके डेवलप्ड कंट्रीज है, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस एंड चाइना इज ऑल्दो आर डेवलपिंग कंट्रीज, बट जिस कंट्रीज की ज़्यादा एमिशंस हैं, जिस कंट्री ने ज़्यादा इमिट किया, जो ज़्यादा ग्लोबल कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशंस, वो कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको $100 बिलियन तक की असिस्टेंस दे. सो दिस इज व्हाट द इंडिया हैज़ रेटरेटेड, एंड दे ऑल्सो कॉल फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज. दूसरी, that is facilitating the technology transfer, and third is putting in place a tangible market mechanism to activate more inbound climate carbon credit market, right? So carbon credit market is something which is very important and it has its future. India में अगर आप बात करें Delhi metro की, so Delhi metro is the metro which used to trade in carbon. Basically they are given the credit of carbon trading. सो जिस कंट्रीज के पास भी कार्बन ट्रेडिंग की एक मैकेनिज्म होगी, वो फ्यूचर में उसके पास एक एडेड एज होगी. Now COP26 meeting, I have already discussed a lot more about the COP26. Yesterday I have told you the Glasgow, कहाँ पे उसकी लोकेशंस हैं, ये सारे चीज़ों को मैंने कल डिटेल में डिस्कस किया. If you have not watched that video, do check it out in the playlist section for 22nd of October news. Now, ahead of 26th meeting, the United Nations conference parties that would begin in Glasgow. Glasgow is a city in Scotland. So, November 1st में इंडिया की अपनी तरफ से presentations दी जाएगी. The Prime Minister would be attending the summit. And the focus on making to meet the success of commitment towards the net zero. And countries की अगर fossil fuel emissions की बात करें, which is there at the peak, at some point neutralized by tracking out excess carbon from the atmosphere. So COP26 is again considered to be an advanced version of Paris climate change, which has set a lot more target, -2 डिग्री तक +-2 डिग्री तक के टेम्परेचर्स को मेंटेन करना, डिक्रीज करना. सो ऑल द टारगेट इंडिया के जो अपनी NDCs हैं उसमें भी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट व्हेन इट कम्स टू नेट जीरो एमिशन देयर इज नो टाइमलाइन दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया. Now, roadmap for India, how India is going to plan and how India is going to execute. तो एक independent think tank है, Council for Energy
Environment and Water Project, they have said that India to achieve a net zero target by 2070. So this is an anticipation by a study. They have stated कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो emissions के टारगेट को अचीव कर पाएगी. And uses of coal, especially in terms of power generation. No, I have also given yesterday some graph and data. That is again very important. अगर आपने नहीं देखा है कल के वीडियोस को, डू चेक इट आउट. तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोल की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस है हमारे पावर जनरेशंस में, राइट. सो इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन वी नीड टू पीक इट बाय 2040 तक जितनी भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस हैं वो हमें करनी चाहिए. एंड वी हैव टू ड्रॉप इट बाय 99% by 2040 and 2060, right? So definitely there is a call for an alternative mechanism to get power. And the consumption of crude oil across the sector will need to be peaked by 2050. यहाँ पे 2050 के टाइम लाइन दी गई है. Subsequently, it has to be decreased by 90%, that is by 2050 and 2070. And India and United Kingdom have agreed to strengthen the climate initiatives to further their partnering as a green partnership. So India, UK and even US are committed that how we can more environment are more sustainable. So this is a graph which is there in the newspaper also. If not, you can take a screenshot. Net zero means committing to an year beyond which the emission would be balanced by taking equivalent amount of greenhouse gases from air. This is a complete definition of net zero, and India has maintained that committing to a target would require reiterating coal plant जो fossil fuels हैं overnight ये हो नहीं सकती है, तो इसके लिए हमें commitment चाहिए so that we can achieve that. And India says that the future of net zero promises and hollow to country responding to the climate crisis not deliver in the previous promises. जिस countries ने अपने promise नहीं किए and even the $100 billion की जो बात कही गई है वो भी होनी चाहिए. And India argues that the country claiming out to be the net zero continues to pollute in the per capita ways beyond their fair share. तो बहुत ऐसे countries हैं जिन्होंने अपने commitment के बावजूद भी और ज़्यादा pollutions किए हुए हैं. Now coming to other news, that is rocket system BrahMos deployed along the line of actual control, something which is important for general studies paper 2 government policies and intervention for the development of various sector. और ये आपके जनरल स्टडीज के पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो इन अ मेजर डिसीजन टू बूस्ट इंडियन आर्मी, खास करके इंडियन मिलिट्री की अगर बात करें, जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे पिनाका, स्मर्च और लॉन्ग रेंज के कुछ ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय किया गया. दीज आर द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट हैव बीन डिप्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. Why they have been deployed, I'll tell you why, the reason behind that. And Pinaka and Smerch rocket system have been deployed closer to line of actual control. अगर चाइना किसी भी तरह से किसी अटैक को प्लान करता है तो we should have a retaliatory measure so that we can also respond if any mishappening happen from China. So this is a preparation of Indian army in terms to retaliate by the basically whatever can, no, we can only have assumptions. What India can do, at best, India can have it preparation. So this is a preparatory part. And the BrahMos has also been deployed in the Tawang sectors. So this is a Smerch multi-rocket launch. You can see this image to get an idea how does this look like. These are the complete rocket launchers from which it can easily be fired. Now, additionally, अगर बात करें rocket system की, so deployment of BrahMos missile, which has a range of 290 kilometers, right? You can see the BrahMos missile here. I'll give you the slide also. Just understand. तो आर्मी के पास ये एबिलिटी होगी कि वो चाइना के कम से कम 290 किलोमीटर के रेंज तक अटैक कर सकते हैं. Smerch, that is procured from Russia. This is not an indigenous. It's the longest range conventional rocket system in Indian Army inventory with a range of 90 kilometers. And Pinaka, this is again indigenously developed by DRDO that has a range of 38 kilometers. So whatever factual point I've mentioned here can be again very important for prelims. And those who are preparing for CAPF examination, उनके लिए इस तरह के points काफ़ी relevant होंगे. So this is about the BrahMos. You can see the maximum range is 400 plus kilometer. Velocity जो है Mach 2.8, weight 2.5 ton की है, और बहुत सारे important information है, salient features है, you can read. It has a high supersonic speed throughout the flight. It has low radar in nature, low flight range,
and flight trajectories. So these are some of the important points which you can read. You can take a screenshot of this. Now, India-UK talks focus on infra and defense, something which is important for General Studies Paper 2, bilateral regional grouping and agreement, evolving India and affecting India's interest. Recently, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, he has met British Foreign Secretary and they have held a wide talk. A number of issues पे बात की गई, but कुछ जो फोकस एरिया थे इस मीटिंग के, that was infrastructure investment as well as defense and security cooperation. So India and UK are uniting in these two sectors widely. So British के जो foreign secretary is expected to announce a series of टेक इंफ्रास्ट्रक्चर टाई अप विद इंडिया, जो कि बूस्ट करेगी दोनों कंट्रीज के इकोनॉमीज को, हेल्प करेगी टू ग्रो इन क्लीन एंड सस्टेनेबल वे, राइट? सो दिस इज द मेन रैशनल. Now, India and UK earlier has also unveiled the ambitious 10-year roadmap to boost the cooperation. किस एरियाज में cooperation बढ़ाने की बात की गई है? That is a defense sector, technology, security and healthcare. So if you're writing this in मेंस पेपर, अगर आपने मेंस में कुछ इस तरह के आंसर लिखा तो ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे ऐड कर पाएंगे. They also announced that an enhanced trade partnership, which they agreed to negotiate in the comprehensive and balanced FTA, including interim trade packet for delivery of early gains. जो free trade agreement है, that is again pivotal for India as well as for the United Kingdom, right? तो UK की बात हो रही है यहाँ पे. And India is the world's largest democracy and a tech economic powerhouse as a vital strategic partner of the United Kingdom. Now the other news, countries call on China and UN to respect Uyghur rights. एक community है Uyghur, इसके rights के बारे में वहाँ पे जिस तरह से चाइना की ये बातें कही गई अभी, जो वहाँ के जो कंट्री जो सेटअप्स है, जो प्रीमियर हैं, they are basically not respecting this community. Something which is important for General Studies Paper 2, effect and policies of developed and developing countries. So United Nations ने, खास करके यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में 43 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने चाइना के खिलाफ एक अटेंशन बताई है यूनाइटेड नेशंस को, एंड दे सेड दैट चाइना शुड इंश्योर फुल रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ द लॉ. जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वाइगुर कम्युनिटी जो जिंगजैंग प्रोविंस में रहती है, उनको लेकर के ये बातें कंसर्न रेज की गई है दैट चाइनीज आर नॉट सेंसिटिव टू दोज पीपल एंड दे आर नॉट गिविंग देम एडिक्वेट राइट विच इज रिक्वायर्ड. और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे डिटेन भी करके रखा गया है. So China has been accused of committing crime against the humanity and the genocides, जो खास करके एक specific community है, Muslim ethnic community, right? So this is Uyghur. Now you can see this area. This is the Xinjiang region where they are mostly अभी अगर बात करें almost काफ़ी population है जो वहाँ पे reside करती है, and this is important कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी कंट्रीज में एक एथनिसिटी की अगर कोई कंट्री हो, इट शुड बी गिवन अ ड्यू इम्पोर्टेंस, और जो उनके रिप्रेजेंटेशंस है वो न्यूट्रल वे में होने की जरूरत है. डिक्लेरेशन साइन की गई थी. डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज द सेवरल यूरोपियन एंड एशियन मेंबर स्टेट एंड अदर. दे हैव अक्यूज्ड चाइना ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस against the Uyghur, including torture, forced sterilizations and forced disappearance. तो बातें कही गई कि जिस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट की इंटेंशंस है, दैट इज नॉट ग्रेट. दिस इज अगेन द ह्यूमैनिटी and they should be given a warning that yes, if you have this much of community, you should try to appreciate your efforts and be neutral towards them also. Now emancipations people की अगर बात करें, चाइना हैज़ लॉन्ग डिनाइड द एक्विजिशंस. चाइना ने इस एथनिक ग्रुप के खिलाफ, जो खास करके मुस्लिम तुर्क पीपल हैं, जिगजैंग प्रोविंसेस में रहते हैं, इनके खिलाफ चाइना ने अपनी बातें में ये कहा है कि दे आर नॉट डूइंग सो. दे हैव डिनाइड द एक्विजिशंस एंड ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिलियन पीपल आर इनकार्नेटेड इन द कैंप्स. तो कई ऐसे पीपल है जिनको डिटेंशंस में चाइनीज गवर्नमेंट ने वहाँ पे रखा हुआ है, राइट. नाउ मूविंग अहेड, देयर आर अबाउट 12 million Uyghurs that are Muslim in the Xinjiang province. They are officially known as XYUR, that is Xinjiang Uyghur Autonomous Region. And these people speak their own languages similar to Turkish, and they seem themselves culturally and ethnic close to the Central Asian region.
and they make up less half of the Xizang populations. तो जितनी टोटल पॉपुलेशन है Xizang प्रोविंस की, उसकी 50% के अप्रॉक्स आप समझ सकते हो, अप्रॉक्स पॉपुलेशंस वहाँ पे रहती हैं. Now the other news, this is an editorial way for political parties to achieve internal democracy, something which is important for general studies paper 2. Parliament and state legislature functioning conduct business privilege and issues arising from it. So this particular editorial focuses upon achieving the internal democracy और कुछ important 3 subheads हैं, that is democracy, accountability, achieving internal democracy and way forward. But for you, what is important in this editorial is, अगर आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. और आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो एंटी डिफेक्शन प्लस जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो लेट अंडरस्टैंड दिस एडिटोरियल. किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म होती है टू कैप्चर स्टेट पावर एंड टू अचीव सर्टेन विजन ऑफ सोसाइटी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल पावर? जो पॉलिटिकल पावर जिस भी एरिया से उनके मेंबर्स, the people, basically the contestant win from particular constituency, they have to represent their people, right? So representing the people vision is the main rationale behind a political parties. So यहाँ पे क्वेश्चंस की गई है कि do we have actually achieved that target? क्या हर एक कंस्टिट्यूएंसीज में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो रही है, या फिर लोग जो बेसिक ज़रूरत है, जो एमपी लैट के थ्रू जो फंड्स में जो अमाउंट दी जाती है 5 करोड़ रुपीस की, क्या उसकी भी प्रॉपर से एग्जीक्यूशन हो रही है, या सारे फंड को वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलीज किया जा रहा है. सो द केस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज डज नॉट इंटेंडेड टू बी मेड फ्रेश. और इंटरनल डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज इज लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो ये बात करती है जो फंक्शनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज की, खास करके जो डिवोशन है टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड द पीपल इज नॉट ग्रेट. नाउ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है. व्हाट इज डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी? सो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इन पॉलिटिकल पार्टीज क्वालिटिवली डिफरेंट इन अदर कंट्रीज. इंडिया में कुछ अलग तरीके से की जाती है और जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे अलग सिस्टम है. इन इंडिया वी फॉलो सम ideas and ideas that are core to political parties and its member. In a country जहाँ पे बहुत सारे differences हैं between the citizen and its visions and value, the core idea should be to promote inclusiveness, growth for all and providing equality to all of the citizen, right? जितने भी fundamental rights हैं उनकी वो सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए. And democracy at the level in the country is a bottom up opportunity where it would be having a change direction. Although जो democratic accountability है in a political party that exists within the ideological framework. So there is an ideology which is attached to a party. Some parties are leftist, some parties are rightist, some are centrist. So accordingly, people try to connect and more or less they try to get an idea which particular party is going to help them in a large number. Now, achieving the internal democracy, how the internal democracy can be envisaged. तो बात करें अगर suggestions की, the most common suggestion is to achieve internal democracy is through internal elections for a leadership position within the party. An elected representative will not just to be grounded themselves, but will also be holding the leadership accountable for its shortcoming. So if the political party try to take the reward for whatever they are doing, the shortcoming accountability should be also fixed to the member of parliament or the political parties. Now affirmative accountability की बात की गई. affirmative accountability होती क्या है? which extends to all members, right? एक affirmative तरीके से, एक conscious तरीके से हर एक पार्टी मेंबर्स के पास ये कनेक्टेड होती है along the 3 interconnected. उसमें 3 कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइडियोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पिटेंस. किस तरह की आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी इज बेसिकली नेचर ऑफ थिंकिंग, द वे पीपल थिंक आउट, राइट? इट्स कॉल्ड हिंदी, इट्स कॉल्ड एज विचारधारा. Organization, what is the organizational setup, how devoted they are and how committed they are towards people, and competence in terms of providing a resolutions to problem. Now there's a normative accountability. This is rooted in a dynamic context जहाँ पे necessary है कि एक deliberate process के through इसको complete किया जाए.
Now, political power exists in the formal and informal sphere, जहाँ पे जो institutional process है, which tries to run the aggregate power likely to run around. So we have to ensure जो political parties हैं, the main aim of this political party is to get power and not to provide welfare to the नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बेसिकली जो उस रीजन से बिलोंग करते हैं. बट एक फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से ये होनी चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट के साथ जो मैकेनिज्म है, उसको मिला करके चलना चाहिए, सो दैट द एग्रीगेटेड पावर जो भी और खास करके इंटरमीडियरीज पावर है, उनके थ्रू पब्लिक को वेलफेयर में लाया जा सके. नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगर बात करें, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इंटरनल पार्टी प्रोसेस, the way for this is to decentralize the power by getting the anti-defection law. जो anti-defection law है उसको हटाने की ज़रूरत है, because in anti-defection law it is considered more to be a centralized. अगर पंचायत में वही उसी लेवल पे उसको हटा दिया जाए, MLAs को उसी के लेवल पे हटा दिया जाए, even they find it more centralized. So इसमें decentralization की बात की गई है कि there should be rid of the anti-defection law. More importantly, the reform would impose a similar burden on political parties and may create a space to change for the political culture. ये second point है. और जो last है, that is a democratic functions must be ideological, imperative and operational choice, जहाँ पे एक legitimate tactics के तरीके से, but not an end to itself a political party. So they should be using all the tools where the welfare concept has been incorporated, right? तो एक welfare states के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो एकदम से एसेंशियल है, that has to be implemented at the earliest, and the main aim of the democratic functioning is to ensure the core essence of democracy and the spirit of the constitution, right? So this is how the way forward can be concluded. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For the first question, the correct option is B. For the second question, the correct option is C. Now, today's MCQ, SANDIS, recently seen in the news, is related to which of the following? GI-enabled tracking system of the sand dunes. This is social security scheme for differently abled, instant messaging platform of Government of India, a new fertilizer developed by ICA. So, if you have read, this would be very easy for you to answer. So, do participate, write your answer in the comment section down below. Second question about the SAT. It is a statutory body established under the provision of SEBI Act 1992. The presiding officer of SAT shall be appointed by the President of India. So this is again a context of polity and current affairs question. Do write your answer in the comment section. Comment section में ज़रूर बताएं. And this type of question will definitely help you to brush up your current affairs as well as the static portions. So this was all about the daily news and editorial analysis. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.